गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ट्रेडमार्क वायलेशन। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में सबवे जो कंपनी है उन्होंने एक दूसरी कंपनी इन्फिनिटी फूड्स की सबअब नाम के रेस्टोरेंट्स के ऊपर केस कर दिया था कि वो सबवे का जो नाम और जो लोगो है वो उसका यूज़ कर रहे हैं एक तरह से, और उसमें ट्रेडमार्क की वायलेशन हो रही है। तो सबवे ने ये कंप्लेंट इन्फिनिटी फूड्स के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी कि उनका ब्रांड नेम और लोगो यूज़ किया जा रहा है, जो कि सबवे के लोगो और नेम के साथ आइडेंटिकल है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि सब जो है वो एक सबमरीन की एब्रीविएशन है, जो एक टाइप ऑफ सैंडविच होता है बहुत लंबा सा। ठीक है। तो सबवे ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि सब वर्ड के ऊपर उनकी मोनोपोली है। और ऊपर से सब वे और सब अर्ब दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं, है ना। तो इसलिए कोई सिमिलैरिटी तो नहीं दिख रही है, इसलिए कोई केस नहीं बनता है ट्रेडमार्क के वायलेशन का। तो अब इसमें हमारे लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो न्यूज़ में आ गए हैं, तो हम वो देख लेते हैं। तो आईपी जो होते हैं वो आपके कोई भी आप प्रोडक्ट जो है अगर, या कोई भी आप इन्वेंशन करते हो आपके माइंड के थ्रू, आप जब कोई कोई क्रिएशन करते हो, कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई लिटरेरी आर्ट हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई सिंबल, नेम, इमेज, कुछ भी हो सकता है, और उसका आप जो है कमर्शियल यूज़ करते हो, और अगर कोई और उसका कमर्शियल यूज़ ना करे उसके लिए आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके खरीद के रखते हो। ठीक है। तो अब बेसिकली कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन फ्लरिश हो सके और उसका कोई और मिसयूज़ ना कर सके, उसके लिए आईपी सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ है। अब कई तरह के होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, जीआई टैग्स, ट्रेड सीक्रेट्स। ये सारे जो हैं इंडिया में अलग अलग एक्ट्स के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक सिंबल होता है, डिज़ाइन होता है, वर्ड होता है, फ्रेज़ होता है, जो कि एक बिज़नेस के साथ एसोसिएट होता है या फिर आइडेंटिफाइड होता है, और वो बिज़नेस उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स जो है वो क्लेम करके रखता है। इंडिया में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 गारंटी करता है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस और ट्रेडमार्क्स के साथ जो भी आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया है उसको उसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है। एक बार जो है ट्रेडमार्क को अगर आप रजिस्टर कराते हो तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, और बार बार उसको 10 साल के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। तो यहाँ पर पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को डिफरेंस समझाने के लिए यहाँ पर एक इमेज शेयर की गई है, आप उससे आराम से समझ सकते हो। ट्रेडमार्क की वायलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है और आपकी परमिशन के बिना उसको कोई और यूज़ कर रहा है, या फिर आपके जो है ब्रांड की सिमिलैरिटी का कोई मिसयूज़ कर रहा है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई ना कोई जो है कंपनीज होती हैं जो आपके ही ब्रांड के नेम का थोड़ा सा एक वर्ड या एक शब्द या एक अल्फ़ाबेट इधर से उधर करके जो है दूसरा नाम बनाकर बेचने लगती हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा वो, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क की वायलेशन। तो इसको जो इसकी वायलेशन है वो आपके ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर गवर्न की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गाइडलाइंस फॉर एंडोर्समेंट। ये भी आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंडोर्समेंट गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अब आपको पता होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं, और कभी कभी तो कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें वो सटल तरीके से उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, और वो बताते नहीं हैं कि उसके लिए उस ब्रांड ने या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने उनको पैसा दिया है। तो अब इसी के लिए ही गाइडलाइंस निकालना ज़रूरी हो गया था कि कंपल्सरीली आपको बताना पड़ेगा कि आपको इसके लिए मॉनेटरी या कोई मटेरियल बेनिफिट्स मिले हैं इसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तो आपको पता है कि साइज़ ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट जो है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। 1275 करोड़ की मार्केट 2800 करोड़ तक पहुंचने वाली है 2025 में। इसीलिए इसको गवर्न करना बहुत यूज़फुल है, वरना तो कंज्यूमर्स को जो है ताकि उनको ठगा ना जा सके। ठीक है। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है इनका इतना रीच हो गई है कि ये आपके परचेजिंग डिसीजंस या फिर ओपिनियंस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये जो है ऑडियंस को मिसलीड ना करें, उसके लिए ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं। अब इसमें कहा गया है कि आपको प्रोमिनेंटली डिस्क्लोजर देना है, डिस्प्ले करना है कि आप उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, उसके लिए आपको मॉनिटरी या कोई कंपनसेशन मिली है। ठीक है। सिंपल क्लियर लैंग्वेज में बताना है कि आपको इसके लिए क्या जो है, आपको ये एक पेड प्रमोशन है, स्पॉन्सर्ड है या एडवर्टीजमेंट है, और आप इस प्रोडक्ट, आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को जो है वो एंडोर्स नहीं करोगे जिसको आपने पर्सनली यूज़ या फिर एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है। अगर आप उसको इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो इन एंडोर्सर्स को पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है या फिर इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। अब ये सारा देखेगा कौन?
हमारा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की। 1985 में बनाया गया था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज को। तो लोगों का कॉन्फिडेंस एडवर्टाइजिंग में बना रहे, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो ये ASCI जो है, ये देखती है कि जो भी मटेरियल एडवर्टीजमेंट में यूज़ हो रहा है वो ट्रूथफुल है, लीगल है, ऑनेस्ट है और डिसेंट है। ये इसका काम है, ठीक है। अगर कोई ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आती है तो पहले तो कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल में एडजुडिकेशन के लिए कंप्लेंट जाती है। फिर वो डिसाइड करते हैं ऑफ कोर्स कि क्या ये जो है एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है या फिर कुछ वायलेट कर रही है प्रोविजंस को। उसके बाद जो है उस एडवर्टीजमेंट को या तो हटाया जाता है या उसको मॉडिफाई करने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मीजल्स एंड रूबेला आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गोल रखा था कि वो मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट कर देंगे 2023 तक। और लेकिन जो है बीच में कोविड आ गया, तो ये गोल अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, ठीक है। बहुत से और भी रीज़न है, कुछ जो है वैक्सीन हेजिटेंसी भी है, कुछ जो है पेरेंट्स खासकर जो है जो लोअर रंग ऑफ सोसाइटी के हैं, वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन को। उसकी वजह से जो है ये एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। तो मीजल्स जो है वो एक हाईली कंटेजियस डिसीज़ है जो कि वायरस से होती है। ये नोज़ और थ्रोट में रहता है इन्फेक्टेड चाइल्ड या अडल्ट के। अनवैक्सीनेटेड यंग चिल्ड्रन जो है वो हाईएस्ट रिस्क पर होते हैं, या फिर कोई नॉन इम्यून पर्सन भी जो है वो इससे इन्फेक्ट हो सकता है। रूबेला जो है वो भी यही होता है, वो भी एक सिमिलर सी एक डिसीज़ है जो कि कंटेजियस है। इसमें डिस्टिंक्टिव रेड कलर के रैश हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, और इसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं या फिर 3 डे मीजल्स भी कहते हैं। इसमें बहुत माइल्ड या फिर बिल्कुल ही सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन अनबॉर्न बेबीज़ के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो डिफरेंस क्या है रूबेला और मीजल्स में? रूबेला जो है वो मीजल्स की तरह नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनके कुछ साइंस और सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, जैसे रेड रैश दोनों में होते हैं। रूबेला इतना इन्फेक्शियस नहीं है जितना मीजल्स होता है, लेकिन दोनों को ही सिर्फ 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन से बचाया जा सकता है। अब इंडिया ने मिशन इंद्रधनुष निकाला है 2014 में, और फिर 2017 और 2021 में जो है गवर्नमेंट ने प्लान किया कि रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन RCV जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाली जाएगी, और उससे हम जो है 2023 तक जो है उसको ख़त्म कर देंगे मीजल्स और रूबेला को। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत से रीजंस की वजह से जो है अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, और आने वाले टाइम में होपफुली वैक्सीन के अडॉप्शन बढ़े, लोग वैक्सीन लगवाएं अपने बच्चों के लिए, और ये डिसीज़ से हमको जो है राहत मिले। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इजिप्ट। ये आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो है हमारे इस बार चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे के, तो इसलिए हमको इजिप्ट की ज्योग्राफी देखनी ज़रूरी है। तो इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब कम से कम 2 कॉन्टिनेंट्स में ये कंट्री एग्जिस्ट करती है। मतलब आपके अफ्रीका में भी आती है ये, और आपके वेस्टर्न एशिया में भी आती है, मतलब एशिया में भी आती है और अफ्रीका में भी आती है। तो इसके जो है वेस्ट में लीबिया है, इसके जो है नॉर्थ ईस्ट में इज़राइल और पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, इसके साउथ में सूडान है, और इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है वो साइप्रस, टर्की और ग्रीस से शेयर करता है ये, और सऊदी अरेबिया और जॉर्डन से ये रेड सी के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। 1922 में ये इजिप्ट एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक यहाँ की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। रिवर नाइल यहाँ की अकेली रिवर है जो कि इजिप्ट से थ्रू आउट द ईयर जो है वो फ्लो करती है, और 98% जो है इजिप्ट की पॉपुलेशन इसी नाइल रिवर वैली में के आसपास एग्जिस्ट करती है या फिर रिजाइड करती है। तो सुएज कनाल भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इजिप्ट का होल्ड है उसके ऊपर। 30 किलोमीटर की आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है ये, इजिप्ट में लोकेटेड है। मेडिटेरेनियन सी को गल्फ ऑफ सुएज के साथ कनेक्ट करता है। अब इंडिया के साथ इनका हमारा डिफेंस रिलेशन में अगर हम देखें, तो रीसेंट जो है डेवलपमेंट ये हुई है कि हमने दोनों कंट्रीज़ ने फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी की कंडक्ट की है, एक्सरसाइज साइक्लोन 1। इसको जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, निकाह हलाला। ये भी आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सेटअप करने के लिए एग्री कर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ पॉलीगैमी को जो है चैलेंज कर रही है एक प्ली, ठीक है। तो उसमें निकाह हलाला भी आता है, उसको भी चैलेंज किया गया है। निकाह हलाला का मतलब क्या होता है कि एक मैन ने अगर अपनी वाइफ को एक बार डाइवोर्स दे दिया तो वो उससे तब तक मैरिज नहीं कर सकता जब तक वो वाइफ किसी और से मैरिज करके उससे डाइवोर्स नहीं लेती, या फिर उसका जो है सेकंड हस्बैंड की डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये एक तरह से थर्ड पर्सन जब तक कंज्यूमेट नहीं करेगा उसके साथ मैरिज,
तब तक जो है उसके बाद डाइवोर्स होने के बाद तब तक वो अपने ओरिजिनल हस्बैंड के पास वापस नहीं आ सकती। ठीक है। सो क्या कुरान इसको परमिट करता है? नो ऑफ कोर्स, कोई सैंक्शन नहीं है होली कुरान में ऐसी मैरिजेस के लिए। लीगैलिटी क्या है निकाह हलाला की? जो हमने ट्रिपल तलाक को जो इनवैलिडेट किया है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के अंडर, उसके ऊपर निकाह हलाला में हमने अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है। तो इसी के लिए ही जो है सुप्रीम कोर्ट ये प्ली को हेयर कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, चार्जशीट गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि स्टेट जो है वो ऑब्लाइज नहीं है कि पब्लिक को फ्री एक्सेस टू चार्जशीट्स प्रोवाइड की जाए। चार्जशीट जो है क्रिमिनल केस में कोर्ट में फाइल की जाती है, वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो पब्लिक को रिलीज कर दिया जाए आरटीआई के अंडर। ठीक है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो चार्जशीट होती क्या है? तो सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि चार्जशीट एक ऐसी रिपोर्ट है जो पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है जनरेट करते हैं। जितने भी रिकॉर्ड्स, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीजर में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे जो है वो चार्जशीट में लिखे जाते हैं। सारे लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिनको पुलिस कस्टडी में या फिर बुलाने की ज़रूरत है या जिनको बुलाया गया है, और इसको कोर्ट में सबमिट किया जाता है। अगर जो है लोअर कोर्ट्स में कोई केस चल रहा है तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। अगर सेशंस कोर्ट में केस चल रहा है तो 90 दिन के अंदर जो है वो चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। अब इसका एफआईआर से ये कैसे डिफरेंट है? एफआईआर तो क्या होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पुलिस प्रिपेयर करती है जब कोई अग्रीव्ड पर्सन जो है वो पुलिस के पास जाता है कंप्लेंट लिखवाने के लिए, और वो सिर्फ तभी लिखी जाती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर कंप्लेंट हो रही है। ठीक है। कोई भी एफआईआर को फाइल कर सकता है, लेकिन एफआईआर सिर्फ तभी लिखी जाती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस में कमिट किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस को बिना किसी वारंट के अरेस्ट करने की पावर होती है, और पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की पावर होती है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन उनको वो बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एएसएमआई मशीन पिस्टल। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने जो है टेंडर रेज किया है इंडिजिनसली सोर्स्ड 5009 इंटू 19 मिलीमीटर मशीन पिस्टल्स का एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये एएसएमआई मशीन पिस्टल्स हैं क्या? फर्स्ट इंडिजिनस 9 मिलीमीटर मशीन पिस्टल्स हैं। जॉइंटली इसको डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने प्रोड्यूस किया है। वेट इसका लगभग 2 किलो है, और 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से इसका डिज़ाइन जो है वो जनरेट किया गया है और इसका प्रोटोटाइप जनरेट किया गया है। ये 9 mm जो पिस्टल्स जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास हैं उनको रिप्लेस करने के लिए ये मशीन पिस्टल्स बनाई जाने वाली हैं। अब ये मशीन पिस्टल क्या होती है? मशीन पिस्टल एक स्मॉल सेल्फ लोडिंग ऑटोमेटिक हैंडगन होती है जिसका हाई रेट ऑफ फायर होता है, और इसको इंटरमिटेंट या फिर सस्टेन्ड जो है वो फायरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लेपर्ड 2 टैंक्स। ये भी आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला है कि जर्मनी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं क्या? जर्मन मेड मेन बैटल टैंक है। इसको सबसे पहली बार 1990s में जर्मनी ने प्रोड्यूस किया था, और ये एक तरह से ऑल राउंड प्रोटेक्शन देते हैं ट्रूप्स को फ्रॉम थ्रेट्स लाइक माइंस, एंटी टैंक फायर, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। ठीक है। तो जनरली इसको जर्मन मिलिट्री यूज़ करती है, लेकिन बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ और कनाडा जैसी कंट्रीज़ भी इसको यूज़ करती हैं। तो जब जब ये कहा गया कि अगर जर्मनी इसको नहीं भेजना चाहता यूक्रेन को तो बाकी कंट्रीज़ को भेजने दो, लेकिन क्योंकि जर्मनी से ये परचेज़ की गई हैं तो उस एग्रीमेंट में ये है कि जो भी कंट्रीज़ ने लेपर्ड 2 टैंक्स जो है परचेज़ की हैं जर्मनी से, वो किसी और कंट्री को शेयर नहीं कर सकती जब तक जर्मनी उसकी इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए जर्मनी अभी तक कोई आंसर नहीं दे रहा है कि वो क्यों नहीं देना चाहता है यूक्रेन को ये टैंक्स। तो इसलिए जो है ये एक तरह से अभी कंसेंसस इसके ऊपर नहीं बन पाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक सेक्टर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने बहुत ही छोटे छोटे सम ऑफ मनी जो है वो फार्मर्स को जो है वो रिलीज़ किए हैं। 4 पैसे, 1 पैसे, 10 पैसे जैसे जो है कंपनसेशन रिलीज़ किए हैं राजस्थान के बाड़मेर एरिया में। उससे जो है फार्मर्स बहुत नाराज़ हैं। तो एनीवेज अब हम देखते हैं ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है क्या।
तो ये इंडियन कंपनीज एक्ट में इसको 2002 में इसको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसको कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की बिगेस्ट इंश्योरेंस कॉर्पोरेट क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, और इसको 6 पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रमोट करते हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और नाबार्ड। तो ये वेदर और यील्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स लगभग 500 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 81 बॉन्ड्स। ये भी आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स जो कि येस बैंक ने राइट ऑफ कर दिए थे उसको क्वैश कर दिया है। इससे इन्वेस्टर्स को बहुत रिलीफ मिला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स होते क्या हैं। ये अनसिक्योर बॉन्ड्स होते हैं और इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता। इसको बैंक्स इशू करते हैं और इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसकी कोई मैच्योरिटी डेट तो होती नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि बैंक्स के पास कॉल ऑप्शन होता है, मतलब बैंक्स जो हैं इन बॉन्ड्स को बाय बैक कर सकते हैं जब वो चाहें तो। ठीक है, इन्वेस्टर से खरीद सकते हैं। तो बैंक्स जनरली इसको अपनी टियर 1 जो कैपिटल है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बोल्स्टर करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये जो हैं एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स, ये बाकी सारे डेट से सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, सिर्फ मतलब जब इक्विटी शेयर होल्ड, जब कोई अगर समझ लो कोई कंपनी या कोई बैंक बर्बाद होता है, तो जो लास्ट में जो पैसा दिया जाता है वो आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। उससे बस एक स्टेप पहले सिर्फ जो है जो भी पैसा बचा होता है वो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स के जो है होल्डर्स को दिया जाता है, और इसको बेसल अकॉर्ड जब साइन हुए थे तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is trademark violation. So this topic is important for your economy section. So a sub is not a Subway sandwich. So this has been ruled by Delhi High Court because a case was filed by popular restaurant chain Subway against Infinity Foods, which is running suburb restaurants in Delhi. So Subway accused that this suburb restaurant chain was using its brand name and logo, which was identical to the mark of Subway. But the Delhi High Court has ruled that sub is an abbreviation for submarine, which is a well-known variety of long-bodied sandwiches, and Subway cannot claim monopoly over the use of term sub. So there is the High Court did not find any similarity between the names of Subway and suburb also. So no case of deceptive similarity was made out against suburb brand. Okay, so basically Subway lost this case here with in the matter of trademark violation. So because trademark is a type of intellectual property, we have to see what is an intellectual property. So IP refers to creations of the mind, like your invention, any type of invention, literary or artistic work, designs, symbols, names, images which are used in trade or commerce. So the IP system has been developed to foster an environment in which creativity and innovation can flourish in the society. So there are several types of IPs like copyrights, patents, trademarks, etc., and all of them are governed in India through their respective laws. So what is a trademark? So it's a symbol, design, word or phrase which is identified with a business, and that business can claim exclusive rights on its use. So Trademarks Act of 1999 guarantees protection for a trademark, and these trademarks are registered and they're valid for 10 years, and they can be renewed by the owner indefinitely every 10 years. So to make you understand better, there is this image, patent, copyright and trademark, and it is differentiating between each other. So you can see where are the similarities, like patent, copyright and trademark all are forms of intellectual property. Copyright and patent both can be in the software field. Trademark and copyright can be in the field of logo emblem. So this is the similarity between these three important IPs. So what constitutes a trademark violation? So whenever you're using a registered trademark without any authorization from the owner, it is a case of trademark violation. Or if you're using a certain type of name which is similar to that name, similar to the name of that trademark holder, it is a case of deceptive similarity. Okay, so like if you are if there is a company named Nokia and you are using the term Nokla and selling the same phones, similar phones, then of course you are using the identity of Nokia. Okay, so that is also a case of trademark violation. So
Of course, but it is not limited to only the selling of phones. So the products need not be identical. So let me tell you with an example, that you know that Nokia is a mobile phone company, but let's suppose you are selling Nokia chips. Okay, the product is different. Nokia is selling the phones, but you are using their name, or changing the identity of that name in a deceptive format to sell your chips. Okay, so basically you are using their brand to sell your chips. So that is also a case of trademark violation. So the next topic is guidelines for endorsement. This topic is important for your governance section. So central government has recently released endorsement guidelines for celebrity and social media influencers, because you know that these social media influencer market in India is consistently rising, and it is likely to reach 2800 crore rupees by 2025. So it has been found that most of the time social media influencers do not reveal that they have taken monetary benefits from a particular company to promote that particular product, and they advertise that product just just saying that they have used it and they have found it very good, without even revealing that they have been paid for that such video or for such post. Okay, so these social media influencers have the ability to affect the purchasing decisions or opinions of a consumer. That's why it has become important to release guidelines and to and regulate these influencers or celebrities. So these individuals, these guidelines aim to ensure that these individuals do not mislead their audience, and for that they have to make public disclosures prominently and clearly display that they are endorsing this product in lieu of certain monetary or other compensation. So they cannot endorse a product or service which they have not personally used or experienced. If they are found to be violating any of these guidelines, they can face penalty, and they can also face jail for a period of 6 months, which can be extended to 2 years. So all this would be taken care by the Advertising Standards Council of India, which is a voluntary self-regulatory organization of the advertising industry in India. It was established in 1985, and it's a not-for-profit company. And the aim of ASCI is to maintain and enhance public's confidence in advertising. So what happens when a complaint is received by ASI? So after receiving the complaint, ASI processes that as per the normal complaint redressal procedure. And after the Consumer Complaints Council finds that the advertisement has violated the rules, then the ad is asked to either modify itself or to be pulled out as per the provisions of the laws. So the next topic is measles and rubella. This topic is important for your social issues. So in 2019, central government has adopted the goal of eliminating measles and rubella by 2023, but due to pandemic and the disproportionate focus of the healthcare industry in India towards combating this virus, we missed this bus and we did not focus much upon this measles and rubella vaccination, and we have failed to achieve the target of its elimination. What is measles? It's a highly contagious disease which is caused by a virus, and it is found in the nose and throat of an infected child or adult. So generally unvaccinated young children are at the highest risk of measles, and it can also target any non-immune person also. So what is rubella? So it's a contagious infection which is best known by its distinctive red rash, and it is also called German measles or 3-day measles, and it either has mild or no symptoms at all in many people, but it can cause serious problems for unborn babies. So, what is the difference between these two diseases? Both are not same, but they have certain symptoms or signs which are similar, like the red rash. And rubella is not as infectious as and severe as measles, but both of them can be prevented by using the two doses of a vaccine. So apart from incorporating these vaccines in Mission Indradhanush, the government also introduced this rubella containing vaccine, and the aim was, of course, to eliminate these two diseases by 2023. But of course, we have seen that the pandemic has disrupted it, and probably the goal would be shifted to a further time.
So the next topic is important facts about Egypt. Why we are focusing it? Because a topic for geography, and it has come into news because the president of Egypt is the chief guest for Republic Day of India this year. So Egypt is a transcontinental country, which means that it exists in two continents or two or more continents. In this case, of course, two continents, Africa and Asia, and it is bordered by Libya, Palestinian territory, Israel, Sudan, and it also shares maritime borders with Cyprus, Turkey, Greece, Jordan, and Saudi Arabia. It became independent in 1922, and it follows the modern standard Arabic language. River Nile flows through the country throughout the year, and almost 98% of the population resides in the Nile River Valley. So, what is Suez Canal? So, it's a 30-kilometer artificial sea level waterway which is located in Egypt, and it connects Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, and it has been used for shipping. It has been heavily used for shipping lanes. If we see the recent developments in our defense relations, then exercise Cyclone 1 becomes important, which is the first ever joint exercise between the Indian Army and Egyptian Army, which was conducted recently at Jaisalmer in Rajasthan. So the next topic is Nikah Halala. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has recently said that it will be setting up a five-judge constitution bench because a plea has been filed in the court challenging the constitutional validity of polygamy and Nikah Halala practice among Muslims. So what is Nikah Halala? So as per Muslim law, if that a man cannot remarry his wife after he divorced her, only if they want to get married, then the woman will have to get married to another person first, basically a third man, and once that third person consummates the marriage and then divorces the wife, and or either dies in the marriage, only then the wife can go back to the original husband. So does the Quran permit this? No, of course it does not have. The Holy Quran does not give any sanction to such marriages. But the legality of Nikah Halala in India is confusing because Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, which was passed to invalidate triple talaq, is still silent on Nikah Halala. Okay, that's why this case ban, or that's why this plea has been filed in Supreme Court. So the next topic is charge sheet. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently said that state is not obliged to provide the public free access to charge sheets because it's not a public document. You cannot just claim the copies of charge sheet in a RTI. So, what is a charge sheet? So, as per section 173 of CRPC, this is a report which is generated by police officers after investigating a case. So, it contains all the stringent records right from the commencement of investigation to the names of all the people who have been brought to the custody, and this report is submitted in a court of law. In case of a case which is triable by a lower court, then it is filed within 60 days from the date of arrest of the accused. And if the case is triable by sessions court, then the timeline is 90 days. Charge sheet is different from first information report. Then what is first information report or the FIR? So basically, it's a written document which is prepared by a police officer based on the information given by an aggrieved party uh, in case of an cognizable offense, which means that anyone can file an FIR, but it can only be lodged in case of in case of a cognizable offense. What is a cognizable offense? Then it's an offense in which the police may arrest a person without warrant, and the police is authorized to start investigation without any orders from the court. So the next topic is ASMI, machine pistol. This topic is important for your security section. So Indian Army has recently raised a tender for the emergency procurement of indigenously sourced 5009 into 11 millimeter machine pistols, which have been jointly developed by DRDO and Indian Army, and it weighs about 2 kg. The prototype and the design of this machine pistol was designed using 3D printing process, or we also call it additive manufacturing,
and it is set to replace the 9 mm pistols in the Indian Defense Forces. So what is a machine pistol? So it's a relatively small self-loading automatic handgun, which is having a high rate of fire. You can fire it from you can fire from machine pistol intermittently or continuously. So the next topic is Leopard 2 tanks. This topic is important for international relations. So US Defense Secretary has recently said that Germany has not yet decided whether it would allow the Leopard 2 tanks to be sent to Ukraine. So Leopard 2 tanks are of course German made main battle tanks. They were produced in late 1990s. They were even used during Afghan war of the NATO. And it provides all-round protection for troops. It is mainly used by German military, but most of the European countries and including the uh, 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 North American country of Canada is using it. But what is the case here? Why Germany is not allowing it? So you know that all the countries which have procured these Leopard 2 tanks from Germany, they have a condition here that they cannot send these Leopard 2 tanks to Ukraine without authorization from Germany. So it's a part of the this condition is a part of the contract between Germany and that particular country. So that's why the permission of Germany becomes important. But Germany the German Chancellor recently made a statement during Davos in World Economic Forum agenda, and he said that he does not want to be a cause of direct confrontation between NATO and Russia. That's why he is not allowing this Leopard 2 tanks to be delivered to Ukraine. So the next topic is Agriculture Insurance Company of India. This topic is important for your economy section. So recently, Public Sector Agriculture Insurance Company of India has released a small sum of just 4 paise, 1 rupee, 10 rupee, 20 rupees as compensation against claims for damage to kharif crops of Rajasthan's Bardmer area farmers, which has infuriated them. And what is AIC? It's a company which was registered under the Companies Act in 2002. It is under the administrative control of Ministry of Finance. It is considered as the world's biggest crop insurance company, and it is promoted by 6 public sector financial banks. I'm sorry, financial institutions, and it provides all weather and yield based crop insurance schemes in over 500 districts of India. So the next topic is additional tier 1 bonds, which is important for your economy section. So recently Bombay High Court has quashed the write-off of additional tier 1 bonds which were issued by Yes Bank Limited, and it has brought relief to the investors, of course. So why the case here is that what is the case here? The case here is that additional tier 1 bonds are unsecured bonds and they have perpetual tenures, which means that they do not have any maturity date. So it can be issued for uh, infinite amount of time, and these are issued by banks, and or the only way to close these bonds is when banks exercise the call option, which means that banks use this call option and the banks buy these bonds back from the investors. So what is the benefit to the investor? So as long as the investor is holding this bond, the holder of the bond is receiving interest from the bank. But if the banks uh, uh, try to, or banks decide to exercise the call option, of course the bonds would be bought back, and it would hurt the investors who were otherwise getting interest. So that's why they went to the court. Okay, so generally the banks use this additional tier 1 bonds to bolster their tier 1 capital, and these additional tier 1 bonds are subordinate to all other debt, and it is just one step senior to common equity. Okay, so these bonds were introduced by the Basel Accords so that the banks can protect the depositors' money. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.